Hi, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. ये आज रात दूसरी वीडियो बच्चे सोए हुए हैं, ठीक है। तो उनकी आवाज़ नहीं आ रही, तो हमने सोचा जितनी वीडियो जो है ना बन सकती हैं उतनी वीडियो बना लें। फिर क्योंकि एडिटिंग में फिर टाइम लगता है ना, तो रोज़ाना टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने में। तो आज जितनी वीडियो बना सकेंगे, तो अगर सेम ड्रेस हुआ तो इग्नोर करना यार, ठीक है। आज 3 वीडियो, ठीक है। तो यार 3 वीडियो तो मेरे काम है एडिट। चलो तो चलो अगले वीडियो ये वीडियो मैं आपका भाई के साथ देखना चाहते हैं ये वीडियो, ओके, फ्रॉम चैनल FTD Facts, okay. 10 biggest reason people love Pakistan. Pakistan is a country that's filled with so many different things to do and see that it would take a lifetime and perhaps even longer for one to experience everything in the country. The country has continually been capturing the hearts of many people as the years go by. So in this episode of FTD Facts, I'll be sharing 10 of some of the biggest reasons why people love Pakistan. Hey guys, welcome back to another episode. My name is Leroy Kenton, and Pakistan is one of my favorite places to talk about here on the channel. We have 10 reasons why people love Pakistan, so be sure to watch this to the end. All right, so let's jump in, starting at number 10, the beauty of nature in Pakistan. Pakistan's natural beauty is much more surprising and beautiful than many foreigners expect. From the scenic mountains up north down to the beaches, the country is filled with so many breathtaking sights. Like literally you can see snow-capped mountains. Also, lots of natural bodies of water, and I mean, the greenery is endless. While we're talking about how the country looks, we gotta talk about the architecture. So it's not just the natural beauty that makes a country lovable, but the amazing architecture as well. The Mughals were one of the greatest dynasties of the Indian subcontinent, and they built many famous monuments like the Taj Mahal, for example. Now, you see, Lahore, Pakistan was the capital of the Mughal Empire for many, many years, which means that it contains some brilliant pieces of architecture. Like, take a look at this. This is the Badshahi Mosque. Also, you're going to see the Lahore Fort. They're perhaps 2 of the most impressive buildings in all of Asia. Both of these structures are just completely beautiful, and there are a lot more structures in Pakistan to see as well, like the Rohtas Fort, then there's the Shalimar Gardens, and also the Tomb of Jahangir. Another reason why people love Pakistan is that there's so many different languages in the country. The official number of languages actively spoken in Pakistan, they're actually quite numerous. So this means that as you go and travel through the country between the different towns and regions, there's going to be some languages that other groups and different regions just don't speak at all. Now, the most popular languages in Pakistan belong to the largest ethnic groups, but most languages in Pakistan belong to the Indo-Aryan language group, including Urdu, which is the national language of Pakistan. So if you're trying to learn many different languages, Pakistan definitely will keep you busy with that. Moving on to number 7, we have to talk about the music. Having a diverse culture has allowed Pakistani musicians to really experience a lot of different forms of music and poetry styles. Like there is Qawwali and Ghazal, they're music styles that are really very unique to Pakistan. And TV shows like Coke Studio, for example, they have gained millions of fans internationally as well as locally. So it's helped brought a lot of these musical styles to an international audience. The nation has also produced legendary singers. There is Nusrat Fateh Ali Khan, as well as you'll find poets like Faiz Ahmed Faiz, who come out of Pakistan, and they left a great influence on culture and the music industry on a whole. Now, musicians nowadays, they also play with some more modern styles of music, but they fuse them into music with the Urdu language, and they mix it with different genres like blues, rock, and jazz, and other genres as well. So yes, you're gonna notice a very unique sound when these genres are infused
with traditional Pakistani music also. Family bonds is a big reason to love Pakistan. This is one of the big things that you're going to notice is that family is a huge priority in the country. And this has a lot to do with the religious, cultural, economic, and societal values in Pakistan. Pakistani society is not led by individualism, but rather collectivism. And this means that family and other relationships, their bonds stand strong. Now, we looked at 5 big reasons why people love Pakistan. We have 5 more to go through, but I do have a related video that I want you guys to check out after this one. It's about the 10 biggest lies about Pakistan. That video, I go into a lot of the misconceptions that people have about Pakistan and do my best to dispel them. So that video is very insightful, it's very informative, and I think you'll find it entertaining and educational as well. So definitely take a look at it. I'll link to it below in the video description section where you can enjoy it after this one. Okay, so let's continue on. Number 5, cricket. Cricket is number 5. Cricket may have been a sport that was introduced to Pakistan by the British, but today the country not only has made it its own, but it also produced one of the world's best cricket teams. Other sports like hockey and squash, badminton, and various other sports are widely played in Pakistan too. But man, if you see Pakistanis watch cricket or play cricket, that alone literally should be a wonder of the world. It's pretty awesome to see their passion, their excitement, and the energy that they put into cricket. So no doubt this is one of the big reasons why people love Pakistan. Also, TV shows. You see, over the past several decades, the Pakistani drama industry has grown big time. The writers, they base their stories around real life events as well as social problems that are relatable to the Pakistani people. So they keep local and international viewers glued to the screens. Number 3 brings us to the food, of course. Oh, Pakistani food. It's just awesome, guys. So I've had Pakistani food a few times in my life, and it's rich with spices, and it's sweet. Sometimes spicy and sweet at the same time. I love that mix. So you'll taste their savory curries, their grilled meats, their fresh fruits, biryanis, so much more to experience in Pakistani cuisine. And for example, like naan. I know, yes, it's just flat bread, but to me, it's not just flat bread. It's pretty much the best thing ever invented that could be an accompanying food to any meal. Just saying, I love my naan, I love it. Next up, we gotta look at the cultural diversity. Pakistanis aren't just one particular culture. A lot of people think that, oh, you're Pakistani, that just means one thing. No. Thanks to its historical and geographical and ethnic diversity, Pakistani's culture is really a melting pot of Indian, Persian, Afghan, South Asian, Central Asian, Western Asian influences all mixed up. There are over 15 major ethnic groups in Pakistan, which differ in their physical features, their historical bloodlines, their customs, their dresses, their food styles, and their music styles as well. Some of these include Punjabis, Sindhis, Pashtuns, Kashmiris, so many different ethnic groups in Pakistan. They all come from the regions as close to home as the Indus Valley or as far as places in Africa or even Tibet. Also, their influence of the religion of Islam has strongly shaped Pakistani culture since it first came to the region around AD 700. And the number one biggest reason why people love Pakistan, and I don't think anyone will argue with me on this one, is that Pakistanis are so hospitable. Guests, travelers, tourists, people that come to visit the country for any reason, whether they're domestic visitors or international visitors, they're always so welcomed with open arms by the Pakistanis. Even the poorest people who don't really have much status in society, they're welcome. Cultural and religious beliefs encourage Pakistanis to show love and respect to people who visit their country. For the religion of Islam, the dominant religion in the country, guests are seen as a blessing from God, and it is taught that they must be given the best treatment possible. So because of this is the biggest reason in this episode why people love and continue to love the country of Pakistan. So that wraps up this episode, guys. Really hope you enjoyed it. Hope you found it informative, educational, and entertaining as well. If there's some other reasons that I didn't include on this list, definitely let me know down below. Let me see who are the proud Pakistanis out there, or people who have visited Pakistan and love the country. Let me know your thoughts and comments down below as well. And also
हॉस्पिटलिटी। सच मैं सच कहूँ, जब मैं जाना पाकिस्तान है ना, मैं फीलिंग सेफ, बहुत सेफ है, बहुत ही इज्जत कैसे kasih banyak इज्जत cakap macam mana? इज्जत नहीं, बहुत इज्जत में, बहुत जागा मेरा इज्जत। Yang last sekali, the biggest reason, number one, hospitality. Betul. Pakistan safe untuk woman. Sach kahun मैं masa saya pergi sana, betul saya cakap, masa pergi sana tak berani cakap, okey, sebab saya dah rasa pengalaman saya, so saya berani cakap, apa tak hormat perempuan lah dekat sana apa semua kan. Tapi saya dah banyak kali pergi sana, sangat dia menjaga maruah perempuan, perempuan dalam keluarga dia. Macam saya sendiri kalau nak keluar, kan kita pergi bazar kan, kalau ada sekali saya pergi bazar, kita pergi tempat-tempat bazar kan ramai orang lelaki apa semua kan. So bila dia tengok kita datang, so orang yang ramai-ramai kat situ kan, dekat bazar tu dia akan buka jalan, tunduk pandangan, dia hormat kita. So rasa macam sangat selamat sebab dia orang tunduk pandangan. Bila tengok kita, dia orang tunduk pandangan. Sebab dia hormat kita, dia tengok cara pemakaian kita pun, dia orang akan hormat kita. Macam tu. So for me, Pakistan is safe for women, for me. ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो का हमारा रिएक्शन करने का मकसद सबसे पहले तो ये था कि जब से वो वाक़या हुआ है ना लाहौर वाला, ठीक है, उसकी वजह से इस वक्त, ठीक है, पूरी दुनिया में इन दोनों ने जो किया, बहुत बुरी बात करो पाकिस्तान के बारे में, मैं बहुत तकलीफ है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जैसे आप लोगों ने वहाँ पे पाकिस्तान में फेस किया, ऐसे ही हम जो ओवरसी पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हम लोग भी यहाँ पर बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, ठीक है। उस वजह से, उस वाक़े की वजह से हम लोगों को यहाँ बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, वो लोगों को जवाब देना पड़ता है, ठीक है, सोशल मीडिया पे भी जवाब देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को तो नहीं पता ना कि पाकिस्तान कैसा है। कुछ लोगों ने जो वीडियो थी उनको सही तरह से आगे जो है ना लोगों तक नहीं पहुंचाया, सिर्फ लाइक व्यूज़ के लिए लोगों ने वीडियो शेयर करते गए हैं और कुछ भी लिख दी है यहाँ की लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ के लोग भी हैं जिन्होंने ये हरकत की है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर ना बहुत प्रॉब्लम हुई, ठीक है, काफ़ी लोगों के साथ झगड़ा भी शुरू। Pasal kes tu dah jadi Pakistan, jadi ramai orang benci dekat Pakistan. Satu lagi siapa? Canada punya biker, solo biker Canada, siapa? Rosie, apa nama dia? Rosie apa tu? हाँ itu dia sudah masuk Islam. Berbulan-bulan dia pergi travel solo biker, okay? Dia solo biker, berbulan-bulan dia pergi dekat sampai area yang terpencil. Tak ada masalah untuk dia, tak ada orang kacau dia, ramai yang bantu dia sepanjang perjalanan dia, ramai orang awam yang bantu dia, sampai dia buat kemah, tidur dalam kemah pun tak ada orang kacau, tak ada gangguan seksual, tak ada. Polis pun ada rounding, Pakistan polis ada rounding, tanya dia, you okay ke tak, macam tu. Hospitality. Lepas tu Malaysia pun ada pasangan suami isteri tu, kalau dia tengok YouTube dia, kembara yang naik basikal tu, yang naik basikal tu, dia pun pergi juga. Ramai ada Malaysia pun ramai ada pergi sana visit. Tak ada kena siapa-siapa lah sana. Lagi satu, kalau kita pergi negara orang, kalau kita pergi contoh negara macam Pakistan, jangan suka-suka buat video, ambil filming, recording, okay, rakam dia orang punya perempuan, okay, itu maruah rumah orang, किसी की इज्जत है ये, शायद वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, so Melayu, mungkin dia wife orang, adik perempuan orang, lagi siapa?
anak perempuan orang. So kalau pergi terutama sekali dekat Pakistan ya, untuk yang suka nak pergi travel dekat Pakistan, jaga-jaga jangan suka-suka rakam tempat yang orang ramai macam bazar. Okey, contoh bazar kan ada perempuan-perempuan walaupun dia pakai nikab macam ni, okey, parda macam ni, tapi jangan sesekali recording dia. Okey, mungkin dia tu wife orang, jangan sesekali recording. Kontrol. Saya sendiri pun tak berani. Suami saya Pakistan, tapi saya kalau pergi Pakistan, pergi bazar, selalu beringat nak recording. Contoh nak pergi bazar memang tak berani nak recording banyak. Sebab tu tak ada kita dekat bazar punya rakaman video ke, memang tak ada. Sebab kita tak berani nak recording sebab ramai perempuan dekat sana. Okay, video ni panjang tapi tak apa, nak clear juga. Kita tak berani recording. Pernah yang first time pergi kita naik tuk-tuk. Kita naik apa tuk-tuk dia apa panggil? Cincin. Kita naik yang apa tu? Tuk-tuk yang jalan. roda 3 tu. Kita naik tuk-tuk kan. Saya dengan adik ipar perempuan. Saya keluarkan handphone nak rakam lah kononnya kan. Nak rakam. Tapi adik perempuan ni risau sangat dia. Babi naik phone rakam babi. Nanti orang marah, dia cakap. Nanti orang marah rakam. So daripada situ kita tahu, tapi dia cakap elok lah, babi please. Dia kasih faham elok. So daripada situ saya belajar. Oh okey, macam ni dia orang. Okey, so kita hormat lah, next time pergi kita tak ada dah recording secara terbuka. Okey, family bonding. Ni sudah Ye बहुत ambil point ni sudah tahu. Yang khana food, ye tak boleh nak cakap apalah. Food tu memang saya suka sangat. Saya kalau balik Pakistan, lidah saya dah boleh terima makanan Pakistan. Koi masalah mere liye food koi masalah nahi. Mi boleh makan. Okay. So yang point penting kat sini nak cakap bonding family, रिश्ता family. Okay, कैसे लड़ाई होती है लेकिन कभी नहीं छोड़ो. नहीं लड़ाई होती है, नहीं छोड़ो, घर नहीं छोड़ो. लड़ाई होती है, biasalah gaduh kan. लड़ाई होती है tapi कभी नहीं छोड़ो. You gaduh macam ni, abang adik gaduh, tapi kalau abang ada masalah cepat-cepat datang macam ni. Terus macam ni. Lagi satu, family bonding dia, ikatan kekeluargaan dia, रिश्ता बहुत strong है, रिश्ता. Ikatan kekeluargaan dia. Satu orang sakit dalam rumah, semua yang ada kat luar sibuk nak beli ubat. Kalau 10 ada adik ipar, 10 ada lelaki dekat luar. Contoh macam saya sakit kan. Saya sakit, ada berapa ramai adik ipar dekat luar kerja. Babi sakit dekat rumah. Okey, sakit tak sihat. Babi kan orang call. Babi sekejap saya balik beli ubat. Bagi tahu lah babi apa. Oh, babi kakak ipar, semua tahu. Okey, babi kakak ipar, okey, jangan salah faham. So, babi sakit dekat rumah, So semua buat balik ubat. Yang ini buat balik ubat, yang ini buat balik ubat. Satu kali semua buat balik ubat. Betapa dia kalau mak, okey, contoh terdekat Ami. Kalau Ami sakit, semua balik tanya Kia hua Ami tabiat kia hua kaise. Dia punya family bonding tu. Itu yang family saja yang rumah ke dalam ada ke orang. Kalau contoh siapa-siapa yang contoh accident, sakit, terus daripada jauh pun ada relatif pun saya cuma nak bagi tahu pergi negara orang, terutama sekali Pakistan, sebab saya sendiri dah kita hormat kan, sebab dia orang, perempuan dia orang memang dia orang jaga, okey. Memang dia orang jaga, memang ada macam kita pergi dekat majlis kahwin kan, tak boleh nak rakam. Boleh rakam tapi tak boleh masuk media sosial. Okey, majlis kahwin dekat dewan tu kita boleh rakam. Okey, saya boleh rakam tapi tak boleh masuk dekat dalam media sosial sebab dekat dalam dewan tu ada bini seseorang, wife seseorang, ada anak perempuan seseorang, ada adik perempuan seseorang kan. So itu perempuan ni adalah maruah dia orang. So kita tak boleh nak suka-suka ambil rakam gambar. So hormatlah
hormat. So lagi yang ada relative, then relative punya orang kawan punya kawan, so kita tak kenal dia orang. Contoh kalau buat video nanti masuk social media, contoh relative kita Tamara, example. Tapi yang itu orang yang kita tak kenal, tapi dia dalam ada handphone, tiba-tiba dia tengok Saya ada notice satu jab mi recording video Usdin dalam majlis walimah. Macam ini perempuan. Macam ini dia takut. Dia fikir saya perempuan luar negara mesti saya akan masuk media sosial video. So dia takut, dia macam ini tau. Tutup muka dia takut. Dia takut yang dia ni nanti masuk dekat dalam media sosial. Tapi saya dah tahu memang tak boleh. So itulah saya nak cakap. So kalau pergi dekat Pakistan, terutama sekali Pakistan, nak cakap jangan suka-suka rakam tempat awam, ada nampak perempuan dia orang tu je lah. So nak dengar tak nak dengar, terpulang lah. Just respect. So harap faham lah. Okay. So semua point yang dia bagi 10 fact tu betul kan? Memang betul. Tapi satu dia tak suka. Drama. Apa khabar drama ni पसंद है वो तुगु गाजी देखो नहीं काफी लोग हैं जो नहीं पसंद करते ना, कुछ ऐसी स्टोरियां होती हैं उसकी वजह से फिर दूसरे भी अच्छे नहीं लगते, तो इतना टाइम ही नहीं होता कि ड्रामे भी देख लें। ज्यादातर जो ड्रामा अर्तुगरुल आया था वही मैं देखता हूँ। लेकिन मैं देखो आपकी बात भी देखती है। पहली से मोहब्बत, खुदा और मोहब्बत, क्या kasih मैसेज yang baik kita ambil lah. क्या मैसेज अच्छा मैसेज है तो अम्बे अपने जगह अम्बे बताओ। अभी बोरिंग है आप, मैं बहुत ज्यादा बातें करते। हाँ आपने बातें की 30 आधे घंटे की वीडियो कर दी आपने। ओके तो करने के लिए ना ये बस ठीक है। जिन्होंने समझना है उन्होंने समझना, जिन्होंने नहीं समझना उन्होंने नहीं समझना। तनकीद करने वाले भी बहुत आते हैं और अप्रिशिएट करने वाले भी बहुत आते हैं, तो ये फेस करना पड़ता है, क्या करें फिर दुनिया है, कुछ नेगेटिविटी लोग आते हैं उनको फेस करना ही तो पड़ेगा ना, हर किसी को फेस करना पड़ेगा। तो जो दूसरे जो लोग होते हैं ठीक है, जो दूसरी कंट्री की क्या बात करें, खुद की कंट्री में भी ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिविटी जो फैलाते हैं ठीक है, अपने मुल्क के बारे में ही बुरा भला बोलते हैं। तो अल्लाह ये उनको हिदायत दे ठीक है। तो हमारी जो कोशिश है वो हम जो है ना, इस ये जो सानिया हुआ है लाहौर में, हमारी जो कोशिश थी वो हमने की है ठीक है। इस वीडियो में जो मैसेज पहुंचाना था लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वो हमने अपनी तरफ से जो है ना वो हमने कर दिया है। बाकी लोग समझे ना समझे वो उन पे डिपेंड करता है। मुझे पता है काफ़ी लोग आगे तनकीद करेंगे, यहाँ के ही लोग आगे जो नहीं पसंद करते, सीधी सी बात है वो करेंगे आगे। वहाँ ना करें तो किसी और हमारे इंस्टाग्राम पे आके कर देंगे या फिर टिकटॉक पे आके कर देंगे। करना ही ज़रूर है, मुझे पता है ना। तो कोई बात नहीं, हम इसी के लिए तैयार हैं। सच पे हो तो रेडी रहना चाहिए इंसान को हर चीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मलेशिया मर्देका। 31 अगस्त को मलेशिया का आज़ादी का दिन है। विश करो ना मलेशिया तो के सब लिए लोग भी। जो है अपना प्यार दिखाएं कमेंट सेक्शन में ठीक है। मलेशिया को विश करें। मेरे मुल्क भी मलेशिया प्लीज विश करो मेरे लिए। मलेशिया मर्देका बोलो। जरूर यार विश करना मलेशिया के लिए भी ठीक है। तो जबरदस्त नहीं जबरदस्ती तो नहीं बोल रहा हूँ, जबरदस्ती तो कोई मानता भी नहीं है ठीक है। अपना ख्याल रखें ठीक है, दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अगले वीडियो जरूर मिलेंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय, अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।